Shazib, please check. Are we live now? Saliha, Shazib. Yes, we are live. Okay, just share the links. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वेबिनार के लिए। जैसा आपको पता है इट्स द थर्ड डे ऑफ वेबिनार एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय। तो हम बस 5 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं ताकि जितने लोग बाकी हमें ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें। इस सेशन के एंड पे आपको मल्टीओमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा कि व्हाट इज मल्टीओमिक्स। बेसिकली हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस हवाले से काम कर रहे हैं, हमारी अभी तक अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। और हमारा एक कोर्स आज अनाउंस होने जा रहा है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फ्यूचर में हमने जो एक इंटरनेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स करवाने हैं उनके हवाले से भी आपको हम बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। हम सेशन को थोड़ी ही देर में स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू हलीमा। Ashanti. I hope you're all doing well. On the behalf of Multiomics, I am Liman, your host for the day, and I extend a very warm and hearty welcome to each one of you here. Well, first, I would like to thank you all for taking time out from your heavy schedules and being here. Thank you so much for joining us. Let's begin the session with a few verses of Holy Quran. For that, I would like Muhammad Abdullah. Please recite the few verses of Holy Quran. Thank you. हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आपको फॉर्मली हेलो इनवाइट करते हैं सर, उसके बाद इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी बच्चे, आ रही है आवाज? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हम फॉर्मली आपको इनवाइट करते हैं, फिर सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके। Muhammad Abdullah, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Jazakallah Muhammad Abdullah. I'll again welcome you all to the third day of webinar on scholarship organized by Multiomics. So today is our last day of webinar
On the first 2 days with Dr. Ramla and Dr. Abid, we talked about IELTS, GRE, and DAAD, and all the do's and don'ts of applying in international university. So today we'll go into more details, and you'll find all the information you need applying for scholarship, with advice to where to find scholarship, how to submit your application, each and everything in detail. For that, I'm so honored and privileged to our today's guest, Dr. Hasan Murtaza. He's an assistant professor in the Islamia University of Bahawalpur. He completed his postdoc from Peking University, Beijing, China. Dr. Murtaza Hasan received his PhD degree in biochemical science from the Beijing Institute of Technology. He is a proof supervisor of HEC to supervise PhD scholars. He has published more than 45 research papers. Thank you so much, sir, for your precious time. And welcome to the third day of webinar on scholarship. So our today's session is going to be slightly different and a bit more interesting. Today we have 4 panelists belong to different universities of Pakistan and different educational background. And they're going to ask a question from the speaker. So before we going further, just a reminder, if you have any question, just write them in chat box. So before any further delay, let's move to our first panelist. She's he's Vishal, Dr. Vishal Kumar. Dr. Vishal, please introduce yourself and ask your first question. Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Vishal Kumar Meshwari. I am currently studying in the Liaquat University of Medical and Health Science, Jamshoro, recently in BDS third year. My first question is that what are the general eligibility required to get scholarships? I think sir का internet disconnect हो गया. He is connecting right now. So just wait for 1 minute. बाकी जब तक जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताते चलें कि ये हमारा थर्ड डे है वेबिनार का. वो इस वेबिनार को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने स्टेटस वगैरह पे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका पार्ट बन सकें. हलीमा मीनवाइल कैन यू कॉन्टैक्ट विद सर कि उनका इंटरनेट जो डिस्कनेक्शन हुई है. ओके सर का टेक्स्ट आया कि जस्ट 2 मिनट्स. ओके तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. जैसा कि हमें हमेशा से ये क्वेश्चन आते थे कि स्कॉलरशिप पे सेशंस चाहिए, स्कॉलरशिप पे सेशंस नहीं हो रहे, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है. प्राइवेट फर्म्स वगैरह हैं जो आपसे कांटेक्ट करती हैं, आपको गाइड करती हैं, बट दे आस्क फॉर मनी कि हमें इतने पैसे दें तो हम आपको बाहर भेज देंगे. एंड देयर आर मेनी स्कैम्स. तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता था. तो उसकी वजह से मल्टीओमिक्स ने एक ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा सेशन अरेंज करें जहाँ पे प्रोफेसर्स आए, वो आपको गाइड करें. वो भी वो प्रोफेसर जो खुद स्कॉलरशिप्स के थ्रू पढ़ के आए हैं, चाहे वो उनकी मेरिट स्कॉलरशिप थी, ठीक है, या किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप के थ्रू वो बाहर गए, उन्होंने बाहर चीज को स्टडी किया, खुद बाहर पढ़े, और ना सिर्फ बाहर पढ़े बल्कि पढ़ने के बाद वो वापस पाकिस्तान आए, अपने कंट्री को उन्होंने सर्व किया, और वो अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज प्रोफेसर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को. तो ये हमने एक सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनिशिएटिव अब तक थर्ड डे आज हमारा इसका, और ये तीसरा दिन आप देख रहे हैं. पहले 2 दिन की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं. और जो सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले 2 दिन की वीडियोस को देखा है और कमेंट सेक्शन में जाके उन वीडियोस पे अपना रिव्यू दिया है, या लाइव चैट के दौरान उन्होंने अपनी वीडियो पे अपना रिव्यू दिया है कि उनको ये सेशन कैसा लगा, या उन्होंने किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछा है. क्योंकि जो लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो उनको इस चीज़ की सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी. और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हमारे पास बहुत सारे नई कोर्सेज हैं. सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो ओवर टू यू होस्ट डॉक्टर विशाल. Dr. Vishal, please ask your question. First question. Dr. Vishal, are you there? I think he is not there. आप लाइबा से या रास्ता से जिसके बारे में उनसे स्टार्ट करें. Okay, Laiba, over to you. Ask your first question. Assalamualaikum. This is myself, Miss
Bukhari, Laiba Bukhari, and I'm right now pursuing my master's in philosophy in biochemistry from Agricultural University, Islamabad. And my first question from you, sir, is how can we apply for any fully funded scholarship in China for MPhil? Is there any test for it? I think sir का connectivity issue है वो दोबारा नहीं बल्कि इधर ही ओके आप उनसे कनेक्ट कर लें, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में इंटरनेट इशू के बगैर कोई हो जाए ये चीज़ ये भी गनीमत है। तो इंशाल्लाह जैसे ही सर इंटरनेट इशू ठीक होता है तो हम इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल अगर आप कोई और सेशन करवाना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वेबिनार चाहते हैं, आप प्रोफेशनल्स की राय चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, लाइक कैरियर काउंसलिंग हो गया, लाइक लाइफ काउंसलिंग से रिलेटेड हो गया, तो आप हमसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का आप कोर्स करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा से अवेलेबल हैं। मल्टीओमिक्स इज ऑलवेज देयर। आई ऑलवेज से कि जितनी मल्टीओमिक्स उसके मेंबर्स के लिए है उतने ही किसी भी यूथ के लिए। तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि मल्टीओमिक्स इस तरह का सेशन अरेंज करे, किसी स्पेशल तरह का कोर्स अरेंज करे, कोई टेस्ट सेशन अरेंज करे, कोई भी चीज जो आप चाहते हैं यूथ के लिए हो, ठीक है, तो हम हमेशा हाजिर हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अब ग्रुप्स को लीव मत कीजिएगा, यहाँ आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी। तो आप कुछ भी करवाना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू डू। सर हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। लाइबा प्लीज आप कंटिन्यू करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सर आप कैमरा भी काइंडली ऑन कर लें। Walaikum salam. Okay, you can listen me. Yes sir. Sir kindly कैमरा भी अपना ऑन कर लें। जी सर। यार इधर लाइट जो है ना, अब मेरा ख्याल है आई डोंट नो कि जो है ना कैमरा जरूरी है। सर बस इतना काफी है। बस इतना काफी है, ठीक है। ठीक है सर। Laiba, you can continue. Okay, so you can. Sir, we are going to ask our first question. Yes, Laiba. Sir, my first question from you is how can we apply for any fully funded scholarship in China for MPhil? Is there any test for it? So the first important thing is that if you have finished a BS, right, in any subject, in a science subject especially, then it will be easy for getting the scholarship in the master's program. So in most Chinese universities, the master's program is for the 3 years. 1 year Chinese they will teach you, and the 2 years they will have, some university have the courses, and some have 1 year research and 1 year coursework like in Pakistan. So regarding the scholarship, I think the most important thing is scholarship is everywhere is present and you can apply, but for that one you must have I mean it will be very easy if you have some review article, or if you have one research article, or you are the co-author of 1 to 2, 3 research paper, because once the Chinese professor and they will see that this student has this student know about the research and they have the research paper, then they will accept very easily. So that's the key things I think. The scholarships are available for the master's and the PhD in the both programs. All right, sir. Thank you so much. So, sir, continuing to my second question from you, sir, how can I differentiate between writing my purpose of achieving some scholarship and my SOP? Aren't they both same? So sorry, I cannot understand your question. So can you repeat it again? Sure, sir. Sir, while I'm applying for some scholarship, we have asked few questions, like you have to write your SOP, statement of purpose, and you just have to justify your goal of achieving certain scholarship. How can I differentiate between these two while writing? I think the statement of purpose is that why you are going to choose the China, and secondly why you are going to choose that university, right? So you have to write the statement about that one. So, and the aims and objective, definitely aims and objective are regarding your research proposal. So you just have to be mention something very current and very burning issues. Before applying to that one, if you will go to the university's website and the supervisor website, and you will go to the
even not supervisor, if you go to the schools and you will see the many you have to see many the research area of the professors and what kind of the area they are covering, and then you will have to make a some kind of the objective that will attract the Chinese professor. So if you have a good objective and you have a good something about the research even only in the title, so then it will be very easy because the student, the teacher, the professor, when once they will read the topic and the objective, they will know that this student, he or she maybe get know about the research and they can easily get the scholarship. All right. Thank you. Thank you so much, sir. So coming towards my third question from you, sir, is it really necessary to get an acceptance letter even before applying for some scholarship? I think yes, it's very important. More than 50%, if once you have the acceptance letter, so it means you have 50% secure your admission. But it is not confirmed that you will be get the scholarship, because many universities, many professors, they are giving acceptance letter to the students, because Pakistani they are applying. A lot of Pakistani are applying to the universities, but I think the key thing is that the 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 repo of the supervisor within the university, not only within the university but within the international office. If one professor is very well known to the international office and his or her relation are very good with the international office, if he or she can give the acceptance letter to someone, then they will easily accept it. So because there is no such kind of a merits, 100% merits in the Chinese universities that you can get the scholarship according to your marks and according to your research paper. If once one professor, a big professor like a dean, like the directors, and they have a big project and they have a big name in the top universities, professor, and he give acceptance to the some student, then the student have more chances to get the scholarship. Because if you will get the acceptance letter from a very young professor, and those professors who are not well known in the university and who are not well known in the international office, then you have less chances to get the scholarship. Yes, sir, totally got your point. Thank you so much, sir. So, sir, coming towards my last question from you, sir, are there any other programs that offer financial assistance that may not deem a scholarship, especially programs or any initiatives? Yeah, in China, I think there are more than 4 to 5 fundings, agencies and fundings program. Then the students can win for the bachelor, masters, and the PhD programs. So one is, the most famous program is the Chinese government scholarship. The second one is, the municipal government scholarships. So municipal government is actually like in our country like a district, like when we talk about like a district Rawalpindi, district Bahawalpur, we will say that district Lahore. That city means the district. They will show that district. Yeah, municipalities. We will call them the district, but the Chinese call them the municipalities. So these municipalities are the autonomous. So they give the funding to the international scholarship. So the student can also apply for the municipal government scholarship as well. But in every university, these scholarships vary. So some only give the tuition fees, some give us some money as a stipend as well. So this one is a second type of the scholarship, and third type of the scholarship is the university scholarship. Every university also have some scholarships, so they will give it a different name, like they are like Beijing University of Science and Technology, so they will name it the Vice Chancellor scholarships. Its name is the Vice Chancellor scholarship. Actually that scholarship is Chinese, that scholarship is equal to the Chinese government scholarship, but university will pay. Its name is only different. So some students only apply on the CSE, but they will not apply on the some other scholarship. So CSE is well known, and even Pakistan and throughout the world,
So there are a lot of people are applying over there, and they will not apply on the Chancellor scholarship or the Vice Chancellor scholarships or the Municipal scholarship, where there is no more competition. So then you can easily win that scholarship. The fourth one scholarship is actually the supervisor. They will get the scholarships. They will give the scholarship to the student, because supervisor have a big projects, right? They will give a university will give the tuition fees. They will waive the tuition fees, but the stipend will give to the supervisor. Like in my labs in Pakistan, even in Islamia University Bahawalpur, I have the two big projects, and my three students, they are getting a 20 and 25,000 per month from one. I have one Chinese government one project, and one I have the HEC project. So I am like giving this support to the students, right? So similarly in the China, they will also have some. They have the big project, and they will give money to the students. And secondly, they will help the student to waive off the tuition fee from the university. It means this kind of scholarship is from the two ways. One, university waive off the tuition fee. The other way, the supervisor give them the scholarship. I remember one of my friends. I will help him. His name is Dr. Jamshed, and recently he is working in the University of Agriculture, Islamabad, in the Department of Biochemistry. So I apply for him in the university, and the university said that we cannot give him the stipend, and we will only waive his tuition fees, and we will give him the free house, free accommodations, but we will not give him the stipend. Then I will talk to his supervisor that my friend, he is not afford to come here to for the eating and for his for his other daily expenses. So then supervisor told me that okay, if he want to come, then I will give him the money. So then I will say, no professor, you must have to write it on his admission letter. Then he is write his on admission letter, and every month for 3 years. So his supervisor gave his money, and he has finished his PhD, and now he back to Pakistan, and he is already serving in the University of Agriculture, Islamabad. So these are the four kind of scholarships. Okay, next question, if you have, or any other student they have, so you can ask to me. Thank you so much, Laiba. Let's move to our next panelist. He is Dr. Vishal Kumar. Dr. Vishal, are you there? Please introduce yourself and ask first question. Hello, I cannot Okay, hear you anymore. Dr. Vishal. Okay, Dr. Vishal का I guess internet issue है, तो Rashta, are you ready? आप आ जाएं. Please ask your first question. Assalamualaikum, sir. My name is Rashta Mabasi. I'm currently studying in MS Botany, Islamia University of Bahawalpur, Bahawalnagar campus. My first question, sir, is this: what do schools look for in international students? What? Sorry, what? What do schools look for in international students? I actually didn't get your question. Can you more clearly to me? Then I will understand for what mean specify it. सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो स्टूडेंट्स किस टाइप के होने चाहिए और उनकी क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो लाइबा ने, तो उसमें मैंने आपको बताया था. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने अपनी सीवी को थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव टू हैव सम रिसर्च आर्टिकल. बेशक आपका अपना फर्स्ट ऑथर पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है रिसर्च आर्टिकल, लेकिन आप अपने सुपरवाइजर की जो है ना वो ग्रुप में काम कर सकते हैं, और उनको रिक्वेस्ट करके आप अपने ग्रुप में जो है उनके ग्रुप में बेशक तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं. तो वो एक तो ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी उनको इंटरनेशनल ऑफिस को ना, कि आप जो है ना. दूसरा ये भी है कि आपकी CGPA 3 से ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए. वो भी मैटर करती है, ठीक है, कि आपकी CGPA भी अच्छी होनी चाहिए. ये दो चीज़ें. थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर सुपरवाइज़र कोई वहाँ आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दे,
तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपको स्कॉलरशिप दिलवाने में। Okay, thank you so much, sir. My second question is, which countries can I work in while studying abroad? I think because I have stayed in China for a long time, almost 7 to 8 years, and I have also visited Australia, Malaysia, and some other countries. But I think the money is more, that is important, because when some person is working, especially you need a money for the chemicals. So that thing is very important, and China have a lot of money. So for both, for getting the scholarship as well as for the research. So can you wait for 1 minute, because there is Azan. So just wait for 1 to 2 minutes, okay? Sure. Okay, sir. Okay, so I'm telling you that we should have to see the 3 things for getting the scholarship. You know, the supervisors, so your CV, your CGPA, and your paper. And second question here is that which country is better? Because I have stayed in China, so I think China is the only country where Pakistani have a lot of respect. Otherwise, in UK, USA, I have many friends there. So the Americans and the UK's people, they will not give a lot of respect to the students, and there is no chance of more paper in that country, because they will focus on the thesis. So because when you will be back to Pakistan and you are hunting for the job, so you must have papers in lot of numbers, means more than 20 to 30 papers. Then when you have many papers, even a small impact factor paper, but there should be many, then you will be easily get the job. But if you have no paper, then definitely within the Pakistan, then it will be difficult for you to get a job. So looking these approaches, I think China is the best approach, and it's a best place for the good scholarship and for the good study, even because they also have a modern techniques. They don't have money for the instrumentation, and they don't have the money for the chemicals. So these 2 things are very important for completing your PhD and your research. Thank you, sir. My next question is, what are the challenges of studying abroad? What are the challenges of studying abroad? Related to second question. Actually, the challenging approach is, it also matter a lot of your interest, and also it matter about the your professors, right? uh, Once if you suppose if you go to such kind of professor whose approach is also very good, and he or she know about the next coming 5 to 10 years, what kind of your topic should be, and what kind of your current should be, that will help you for in the future to have a very good for easily getting a job and for your better future. So that's, I think that's approach is totally depend upon your supervisor, that he will give to in what kind of the direction. So I think that's most important thing, most challenging things, because once you will go to the, even in China or USA or UK, any country, you will go there and you will do the traditional research, and your research don't have a thrill and don't have a some hot issues and something like, which will be very important in the future, then you will definitely have a problem. I think your challenging task, it should be a very hot, and it should be a very challenging and very good one. Then you will be easily adopt in any kind of environment in the world in next 5 to 10 years.
Thank you, sir, for this answer. So my next question is OED that funds a region student in Austria? Sorry? If not, is OD that funds region student? If not, what are the other donors? You're talking about the Austria, because I don't have information about the European and other countries. I know about the the China, the maximum information regarding the China. So other countries I am not sure, but uh, Okay, maybe consult to some other one. okay, sir. I change my question. Sir, चाइना में जो एमफिल के लिए हम क्या कर सकते हैं? फुली फंडेड क्या है? कि एमफिल करना चाहते हैं तो कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट है? I think Chinese government scholarship is better, but one is cash to ask scholarship. So regarding the money, so it's almost a double scholarship, because the Chinese government scholarship is 3,500 RMB, but the cash to ask scholarship is 7,000 RMB. But the problem is that the cash to ask scholarship, if you will win that one, that is also good, but they will keep you like your servant, right? So even you have to go to there for 8 o'clock, and you have to come back about 10 to 11 o'clock. But I think I don't like that kind of scholarship which you have to only work like a labor person, and they will give you a lot of money, but you don't have freedom. I think Chinese government scholarship have a lot of freedom. So because during the PhD, you not only have to learn the books, your personality is also very important. Your other link is important. You must have to visit the China. You must have to enjoy their food, their culture, and some other things. So it's up to your choice. If you go for the cash to ask scholarship, so you will be just like the bookworms, and you have some good paper. uh, but I think if you are hardworking and you know the things, then you will also can earn a lot of paper in the in the Chinese government scholarship as well. Because when I have finished my PhD, I remember I have a 6 paper as a first author and 19 total paper in the in the PhDs. So which I think only some of the Pakistani have done this job. Thank you so much, sir. My last question is this: what factors should I consider when choosing a country for studies? I think first important thing is that your family, whether they will allow you to go for the means every country. Once they are ready, you should go anywhere in the world. Second factor is important, that money is important, definitely. Like if you are getting some handsome scholarship in Italy or in Brazil or in Turkey, so you must have to see about these things, because money is also very important. Because if you have a handsome scholarship and money, so you will mentally satisfy, and you will be focused on the studies. But if you have very less scholarship, you will have a tense, and you cannot focus on your studies. So I think this will be the most important factor that will be help you. And the third important thing is also that, because why I am in the lab ask me these questions, also why I am saying that China is the best, because Chinese people are more friendly, and they will easily become your friends, and you can have enjoy their culture and their food and everything. But I think when you will go to other countries, it's not very easy. Like the European people, they will not easily mix with the Pakistani, so they will not give a lot of respect to us. But in Chinese, they will give us a respect. I think that's the main thing, that China, I also like the China because of these things, because they give a lot of respect to us. Thank you so much, sir, for satisfied answers. Thank you so much, Rashta. Let's move to our next panelist. She is Sarah. Sarah, please come and introduce yourself and ask your question. Thank you so much, Harima. Assalamu alaikum, sir. My name is Sarah Malik, and I'm the final year student of BS Biotechnology from International Islamic University, Islamabad. I'll begin this with my first question. That is, you have talked about academic requirements, having a good paper, and supervisor recommendation letters. But I want to talk about what are the impact of extracurricular activities and having,
internships, do they have a good impact on getting chances of and increasing chances of getting a foreign scholarship? These aside from academic requirements, these extracurricular activities and getting involved in different kind of stuff to increase your experience. What are your thoughts about that? I don't think so. It's matter a lot, because the reason is that why the Chinese people giving us the scholarship. The China main the objective was that, uh, which I have learned from the Chinese, that their English is not very good, and they will start this program that they will not send their whole team, their whole professor, their all student to Europe to learn the English. So they will decided that they should give us some scholarship, some money to the subcontinent people like Pakistan, India, and Bangladesh. When they will come there, they will have more interaction with their supervisor, their student, and even their shopkeeper, and even their other their young generation, and their whole the nation will learn the English in this way. So, looking these things, I think their main objective is that their teacher, the supervisor, so they will also learn English, their from the international student, as well as their English regarding the writing the paper is not good. They will give a money to the the European people for writing this paper. So, but when Pakistani, they will go there, so they are actually seeing that their CV, their curricular, they never consider it, more consider it for the scholarship, the co-curricular activities. They will consider the more the academic activities, as I will also answer to the first or second the candidate. They are asking to me that your CGP should be more than 3, and you must have some paper. So these things, I think they will consider more. Curricular activity, I don't think so. That's matter a lot. Okay, sir. What you really mean is that having a good GPA and having a paper published is what matters a lot if you're looking for scholarships in China. Got your point. Thank you so much. I will move towards my next question, and that is that there are certain tests, and if a person and if a student cannot afford the fees of the tests like SAT and IELTS, then what should he do? I think China don't have this kind of test, um, because so this is, I think, the basic requirement if you want to go to Australia or England or some other, Italy and Brazil. So they, like Turkey and Italy, so they have this requirement, So I know the Junaid, he's a very good guy. He's arranging the things right for the some of the students who cannot afford this kind of fees. So they will keep the thing secret, and many people, they will they will support to him. So this is the only thing that before leaving there, these things can be arranged from here. I think from the Pakistan, not from the abroad. It's very hard. Okay, sir, got your point. Sir, my third question would be that you have talked about it is not a requirement for Chinese scholarship. So, do they offer certain kinds of tests, and what is the preparation criteria of those tests if Chinese scholarship have some particular tests? No, Chinese don't have any kind of test. They don't have an entry requirement for any kind of IELTS or TOEFL, or even they don't have the HSK requirement. No. Okay, you don't have to give any test. You just have to come with your academic background and everything, Yes, and yes. this is the only Only it's requirement. enough you have a BS degree. Nothing more is required. That is quite easy, sir. Then. Yeah, that's easy. Okay, because as far as Germany and other countries are concerned, you have to give IELTS test and have Yeah, yeah. certain scores. The Australia and Germany, the European country, they demand this for GRE and SAT and some other kind of test. Okay, sir. So, sir, what about Chinese language? Then, now that we are coming forward, do you have to learn it before and have a good grasp on this language before going to China for this kind of scholarship, or English also works there well? I think once you will be entered, you will get the scholarship. Then you will learn the Chinese there. Like I went there, so before that one, I didn't know the single word of Chinese, but when I go there, I will learn the Chinese there. But this will be the plus point if you will learn the Chinese in Pakistan, and no, China and Pakistan and CPAC and our government have launched a many Chinese HSK1 and HSK2 level program
for learning the Pakistanis, but unfortunately our student and our nation don't take it serious, and even China give a lot of money to in Shabazz Sharif era, and I was also, when I will join the Islamic University in 2016, my wife and I, we both teach in the evening program, and we teach the Chinese to the Pakistani students in government technical colleges in all the Punjab areas. Our government have started it. That's the student, the youngsters will learn the Chinese, but unfortunately the people will not take it serious. They will just joke it, come it here and come and go. So but if you will learn the Chinese, so and you will even pass a HSK1 or HSK2, it will be a very helpful for you to get the scholarship. Okay, sir, thank you so much. That was all from my part. Thank you for having such detailed answers, and I'm very satisfied with my answers. Thank you so much, sir. Okay, welcome. Thank you so much, Sarah. Let's move to our next panelist. She's Maria. Maria, are you there? Please introduce yourself and ask your questions. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum, sir. My name is Maria, and I am doing BS English from Punjab University. I am currently in 6th semester. I have some certain questions about scholarships and everything about studying abroad. So I'll start my questioning session. The first question I want to answer is, sir, I want answer from you is that what is the best time to search and apply for the scholarship? I think his best time is almost this mid of the November until the end of the December, because most of our students think that's the deadline is about 15th March, and they will apply later in the January and the February. But I know many universities, if they have a 50 seats, because in China, February is in China the mid of the January and till the mid of the February. So there will be a winter vacation in China, and they also have, the Chinese have their Chunjie. Chunjie means they have the New Year's festival, like जैसे हमारे यहाँ ईद होती है, and they will go back to their homes. So the Chinese mostly they will finalize the scholarship, half of the scholarship before the the holidays, and other half they will finalize the after the January. It means the people who are applied before early, so you will get early, you will have more chances to win the scholarship. Okay, sir, thank you. The second question I want to ask is that do we really need to pay consultants for admissions or not? Because there are many consultants that are asking that they will confirm that our admission will be done, or admission process will be done, or application will be accepted. So I want to know whether is there any need of it or not? I think it's depend upon your pocket, right, and your family financial background. Once you have get a very professional people, a lot of people I also know the people, they will give a guarantee, right, that we will work for you, and we will I think this is their business, and if you will do some commitment with someone, right, if he'll ask you money for 1 lakh or the 2 lakh, and they will say that we will surely we will give a guarantee you to find a scholarship for you, I think it's not a big deal. So if your parents give you money, so you should have to be, because you will have no more tensions, so you just give them the documents and they will search for you the scholarship and the university, because 1 and 2 lakh is not a big, once you get the scholarship at per month you will get the 1 lakh rupees. So it's up to you people, that's what how you be handled. But if you will not pay the money 1 and 2 lakh, then you must have to do the effort. Okay, sir. The third question from my side is that what is the best time to apply or to go for the GRE or SAT test? I don't know about the SAT and GRE and this. I already told you that I went to China and I know the information about China, and China don't need such kind of the test. And if you definitely, if you're applying for the test, that is a requirement for the European country. So you must be you must be given test, and your result will be ready before the deadline of the any scholarship anywhere in the world. Okay, sir. The fourth question from my side is that
as I'm a student of BS English, you know that. Apart from USA or UK, because being realist, it's totally. I know it's impossible for me to afford that unless I get a scholarship. It's impossible for me to go on financial system. So I want to know what other nation is best for me to go for my MPhil in linguistics, because as you are talking about China, they are not particularly good at English. So I want to know which other country I can go apart from China, UK, and USA, which is good for my degree. I am not very good in English because I always remain the science student and I don't know about English. But I think uh, China in the Beijing, there is a linguistic university and they have, they have hired the faculty from the abroad. The European people, they will teach the English there. Its name is National University of Language, Modern Language, like our normal university is similar like that university. There are two universities in the Beijing, so I don't remember that one. But I think if you will go there, you will be satisfied from there because even China is not a English speaking country, but still they have a very good faculty member, especially in the language. So they will satisfy to you. But I recommend you, if you win the scholarship for the China for English, it's not a big problem for you. Okay, sir. The last question from my side is that I told you that I'm a student of BS English. So, what type of internships I should do? Because when we are applying for the scholarship, there's a special segment that talks about what I did. You have any co-curricular awards, achievements, or any kind of internships? So, from one side, listened from one person that he was talking, that he was saying maybe you should have some kind of internships and research project. You should have some kind of research projects or internships so you can have more chances of acquiring a scholarship. So what type of internship should I do for my degree to make my case stronger for the scholarship? I think why you people are wasting your time for the internship. So if you are doing a BS, so simply I know that in HEC, the course content that they have a research methodology section course, and one is the scientific writing, which I am also teaching. Junaid and Agana Mariam is also here. She must be listening to me. So they are my students. I think if you will, from your own university, you will learn a very well way from your teacher, and you will ask them to write a review article, or you will learn some technique from your supervisor, and he will give you some letter. That is enough. You don't need to be waste time for the internship. So because your review article, your research article, review article, they will matter a lot for winning the scholarship. Internship is, I don't think so, help you to be winning the scholarship. Okay, thank you so much, sir. I'm very satisfied with your answers, and thank you for giving me some your precious time. Thank you. Okay. Thank you so much, Maria. Okay, great. I think I got to everyone and their question. Thank you all panelists. Sir, my last question is just अपना opinion बताएं कि आप हमारी organization है Multiomics, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सर जुनेद ने जो initiative लिया कि वो students की help कर रहे हैं like this session, तो आप क्या कहना चाहेंगे? I think you people, Multiomics is very good, but it's very surprise for me. There are only a few students here, so this is like even many students are interested. They want to learn this, want to win the scholarship, and they want to know Sir, we are more. going on live on YouTube, so a lot of people are listening to us right now. So this one is, maybe there is something you have to be work on there. Whether you have सर सॉरी टू on, इंटरप्ट यू सर जूम पे सिर्फ हमारे जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, यूट्यूब पे हमें काफी ज्यादा लोग सुन रहे हैं. हमारे 700 से 800 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है इस सेशन की, तो वो सारे आपको यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं. oh, it's okay. Then it's okay. So maybe anyhow. So I already appreciate to the Mr. Junaid, right? He's already doing a very good job.
So I think you people can. I also appreciate you. That's for you young people. So you people are working a lot and you are doing a lot of things in a one time. You, especially for the research, you are organizing a good researcher, the professor, and you will giving this a lot of faces, new faces to the new students. They will learn in a very short time. They will know in a very short time. I remember once. I remember in my student time that we are looking for the such kind of seminar and the things for many months. We have to wait it for that we will get some single information from the scholarship, but we were not be able to find these kind of things, and even once or two times in a year. But I think this is a very good initiative you people have started it, and I think it will be very useful for the youngsters, and you will be I think it's a very good and uh, God will give you help. Actually, you people are it's not very easy things that you are giving a time, and you are actually thinking for the other people. Once you start thinking for the other people, then I think the God will help to you, and Allah will open your new ways and have a bright future for you. So I really thankful for you people to invite me to come here. So thank you very much for our you listener. And if you have any question to me, you can also contact with me from my from my website even. So you have mentioned only 45 my paper, but that was very old 2 year back. But right now I have more than 75 papers, and I have some very good projects. And my student, a lot of my students, they are now doing a PhD in the China. And in every year my one or two students are getting a good scholarship abroad, and they are already pursuing their PhDs. Uh, and some my MS students are also already have been in China. So I hope they will have a bright future, inshallah. Thank you so much, sir, for answering those questions, and it was a pleasure to have you with us. Before winding up, I would like to invite our CEO of Multiomics, Mr. Mohammad Junaid Iqbal. So it would be our pleasure to listen to your words. थैंक यू सो Okay. मच एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप लोगों के लिए कुछ करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही रास्ते बनाता जाता है। तो इस लाइन पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने सेशन के दौरान भी कहा था कि मल्टीओमिक्स की एक वाहिद सपोर्ट जिसको आप कह सकते हो एक बैकबोन है, वो है कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है और इसके बढ़ के कोई नहीं है। हमने जितना कुछ अभी किया, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्टीओमिक्स कब से बनी, कैसे स्टार्ट हुई और कितने अरसे में हमने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए। तो ये सब कुछ जो हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद की वजह से। और ये कोई हम्बलनेस में या इसलिए नहीं कि हाँ ठीक है हम सब मुसलमान और हमने ये लाइन करनी है, नहीं। ये एक रियली एक ऐसी चीज है जो हमने एक्सपीरियंस की है इस दौरान में। हम जहां जहां अटके, जहां जहां लोगों ने कहा कि हमें क्रिटिसाइज किया, ताने मारे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने एक अचानक से एक ऐसा रास्ता क्रिएट कर दिया जो हम सोच भी नहीं रहे थे कैसा होगा। ऐसे ऐसे लोगों को हमारे पास भेज दिया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ये हमें मौके मिलेंगे, इन लोगों के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत कुछ होता रहा। तो खैर इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो एक ही अल्लाह ताला की मदद है। इसके अलावा और आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज है जिसने हमें और मल्टीओमिक्स को जहां पर आज हम खड़े हैं यहाँ तक लेकर आए। तो बेसिकली मल्टीओमिक्स इसका आगाज हुआ था 25 अक्टूबर 2020 से। आगाज किया था आप जैसे स्टूडेंट्स ने, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं इसी तरह हम सब स्टूडेंट्स हैं। हम बैठे थे और हमने सोचा कि यार कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम अपने स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को दिखा सके। हमने एक कोर्स करवाया, उस कोर्स के बाद हमें पता लगा हमारा कोई स्टूडेंट जो था वो ग्राफिक डिजाइनर है, कोई स्टूडेंट कंटेंट राइटर है, लेकिन दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपनी स्किल्स को शो कर सकें। देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट जाते हैं वहां अपना काम करते हैं, बस काम उनसे लिया जाता है और खत्म। देयर वाज नो काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, देयर वाज नथिंग लाइक कि हम एक फैमिली की तरह काम करें। देयर वाज लाइक जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वहां आपका जो सीईओ है आपका गेस्ट बन के आ रहा होता है, आपका जो हेड्स है वो आपसे ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे वो आप पे कोई रूप डाल रहे हैं, आपके वो वाकई हेड्स। तो जब ये चीजें हमने सोची, हमने कहा क्यों ना एक ऐसी फैमिली क्रिएट की जाए, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क नहीं कर रहा, हर कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, हर कोई एक ऐसे हमारे मोटिव के लिए काम कर रहा है, हमारे एक ऐसे मिशन के लिए काम कर रहा है जिसको हमने आगे लेके चलना है। और वो मिशन क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां सब कुछ हो सकता है। वहां सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं हो रही, वहां सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं हो रही, वहां सिर्फ कोर्सेज नहीं हो रहे, वहां सिर्फ कॉम्पिटिशंस नहीं हो रहे, वहां वेबिनार सिर्फ नहीं हो रहा, वहां डिफरेंट क्लब सिर्फ काम नहीं कर रहे।
हर वो चीज जो आप चाहते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करे, हम वो हर चीज करेंगे। हमें लोगों ने कहा पीपीएससी के टेस्ट सेशन करवाए, हमने वो करवाए। हमें लोगों ने कहा सीएसएस का क्लब होना चाहिए, हमने एक सीएसएस का अलग से क्लब बनाया हुआ है। हमें कुछ के पॉप लवर्स हैं, ठीक है, कोरियन कल्चर के, उन्होंने कहा कि हमें के पॉप का क्लब चाहिए। पाकिस्तान में ये चीजें पहले नहीं कोई करता था, हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए क्लब क्रिएट किया। हमारा एक बुक क्लब काम कर रहा है, जो बुक रीडर्स हैं वो सारे वहां आते हैं, बुक रीड करते हैं, उसका एक रिव्यू होता है। हमने इतना कुछ इसमें इन्वॉल्व किया कि कोई कल को ये ना किया कि यार हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। तजवीद का कोर्स रमजान मुबारक में हमने करवाया, हमने सीरतुन नबी पे सेशंस करवाए फ्री के अंदर, ठीक है, ये सारा कुछ करवाया, ठीक है। हमने हर तरह की चीज जो इन्वॉल्व हो सकती है हम इसमें लेकर आए। क्यों? क्योंकि आपको फील हो कि ये आपका घर है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई रैंडम जगह नहीं जहां आप जाओगे काम करोगे एक दिन आप इसको छोड़ दोगे। ये एक आपका ऐसा घर है, ये एक आपकी ऐसी फैमिली है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। आज से 10 साल बाद भी आओगे, मल्टीओमिक्स विल बी देयर फॉर यू, हमेशा आपकी है। जितनी मल्टीओमिक्स पे हक मेरा है, अगना का है, शाहजेब, सारा, सौले, जितने लोग भी देख रहे हैं, उतना ही हक उस शख्स का है जो इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहा है, उतना ही हक उसका जो हमारा मेंबर है, ठीक है। इसमें कोई सीईओ बड़ी पोजीशन पे नहीं है और एक मेंबर जो है वो नॉर्मल है। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जितना काम आप करोगे उससे 10 गुना काम हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि ये एक फैमिली है। इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट लाइक जब हमने मल्टीओमिक्स स्टार्ट की, मैंने एक लाइन बोली थी कि हम एक बीज बो रहे हैं और एक टाइम आएगा ये बीज एक दरख्त बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बीज जो है एक छोटा सा पौधा बन चुका है, इसको अभी हमने उस दरख्त तक लेके जाना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो किया मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मल्टीओमिक्स जो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, वी आर नाउ रजिस्टर्ड इन SCCP एंड FBR आल्सो, ठीक है। तो हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एज रजिस्टर्ड फर्म, एज रजिस्टर्ड कंपनी काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ आओगे, हमारे साथ शामिल होगे, तो आपके सर्टिफिकेट की, आपके जो भी काम किया उसकी एक वैल्यू होगी। ये नहीं है कि आप रैंडमली, आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो नॉट इवन रजिस्टर्ड, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए मैटर भी नहीं करता इवन, ठीक है। अगर आप कहीं जाते हो, अगर आप हमारी तरफ से अगर हमारे लिए कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर वो कल किसी ग्राफिक डिजाइनर की फर्म या कंपनी में जाते हैं, उनके पास हमारा एक वैलिड सर्टिफिकेट है कि उन्होंने एक ऑफिशियल फर्म के साथ जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर, उसके साथ ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे एम्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, बिकॉज आई माई सेल्फ डूइंग सम वीडियो वर्क, लाइक मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, फिल्म मेकिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ। हमें कभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जैसे सर मुर्तजा बता रहे थे कि पहले एक दौर था जब ढूंढने पड़ते थे कि ऐसे वेबिनार्स हो जो हम ये चीजें बताएं, हम वो सब आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। हर वो चीज जो आपको, जिसकी आपको जरूरत है, आपको कहीं जाके किसी की मिन्नत ना करनी पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े, पैसे ना लगाने पड़े, आपको वो चीजें यहाँ मिले। इवन हमारे जो कोर्सेज होते हैं, लाइक हम साइंटिफिक, सर मुर्जा भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, वी आर ऑफरिंग साइंटिफिक राइटिंग कोर्स। मार्केट में जो कोर्स आपको 10,000, 15,000, 20,000 से भी ऊपर का मिलता है, वो भी सिर्फ 1-2 दिन का, हम वो 5 से 6 दिन का पूरा आपको सेशन करवाते हैं, और वो सेशन जस्ट हम 1,000 रुपीज का होता है, बल्कि उसपे भी आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं कि अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है, आपको उसपे भी फाइनेंशियल, आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और आप जाके हमारा पेज विजिट करें, हमारे उस कोर्स के, हमारे जितने कोर्सेज के जाके आप रिव्यूज चेक करें। हमारे अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है वो आपको खुद बताएंगे कि हमारा कोर्स जो होता है, इंशाल्लाह हमने कभी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे कोर्स का मुकाबला कहीं भी जाके, पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के जाके कोर्सेज से कर लो, आप लोग कभी नहीं कहोगे कि इस कोर्स में तो मल्टीओमिक्स वालों ने ये चीज नहीं सिखाई। इंशाल्लाह आपको A to Z हर चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है। टीम्स में वर्क करते हो, आपका पूरा ट्रेन किया जाता है उन टीम्स में। और यहाँ ये नहीं है कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई यार है, आपका कोई जानने वाला है तो हाँ उसको पोजीशन मिलेगी, नहीं। जितने मल्टीओमिक्स में डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनको मैं खुद 5 माह से पहले नहीं जानता था, कईयों को तो 2 माह पहले से नहीं जानता था। दे जस्ट केम, दे वर्कड हार्ड, और उन्होंने अपनी पोजीशन को अर्न किया, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, और वो आज लीड कर रहे हैं दूसरे लोगों को, वो आज लीडर्स हैं, ठीक है। हमने लीडर्स क्रिएट करने हैं, हमने एक ऐसी फैक्ट्री बनानी है जिसमें से लीडर्स निकलेंगे, ठीक है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जिनका माइंडसेट है कि नौकरियां करनी है लोगों के लिए। हमने लीडर्स क्रिएट करने हैं जो फ्यूचर में जाके अपने अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, जो फ्यूचर में जाके लोगों को लीड कर सके। पाकिस्तान में यूथ की जो पावर है वो हमने दिखानी है कि नहीं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। और हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हमने एक दूसरे को लेके चलना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जितना मर्जी आप लोग बातें सुना ले अपने सीनियर्स को या अपने जो हमारे से एक जनरेशन पहले वो करप्ट है, ये है वो, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर बदलेगा। आप में से हर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। और खासतौर पर जो लड़कियां, उन्होंने पूरी पूरी एक जनरेशन तैयार करनी है आगे आने के लिए। तो अगर आप लीडर्स होंगे, आप लीड करेंगे लोगों को, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज होंगी, आप अपनी स्किल्स को पहचानोगे, तो आप देखोगे कि कैसे आपके वजह से, हर एक शख्स की वजह से पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह।
तो मल्टीओमिक्स ने काफी सारी एक्टिविटीज करवाई हैं, ये कुछ आपके सामने नजर आ रही होंगी आप लोगों को, जैसे हमारी डिबेट्स हैं, स्पीचेस, डिस्कशंस, हमने हर तरह की चीज को हमने टच किया है, चाहे आर्ट्स में कैलीग्राफी हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, आईटी सेक्शन के लोग हैं, कोडिंग, वेब डिजाइनिंग वगैरह, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया हमने कुछ करवाई हैं, हम टूर्स वगैरह भी लेके जा रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हमने करवाए हैं, हमारी बहुत जल्द कंटेंट, जुलाई के अंदर कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के ना सिर्फ कोर्सेज आ रहे हैं, बल्कि आपको 3 माह की फ्री इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा वीलॉगिंग, फिल्म मेकिंग, हमारे पास एक प्रॉपर चैनल है, अगर आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, आप अच्छे राइटर हो, आप अच्छे एडिटर हो, आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर हो, आप कैमरा हैंडलिंग सीखना चाहते हो, आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, यू कैन कम, ठीक है, आपको ये सब सिखाया जाता है। उसके अलावा वॉलंटियर वर्क, मदद, वेलफेयर मूवमेंट, हमारे एक प्रोजेक्ट जिसके थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं, स्टूडेंट्स मिलकर मदद कर रहे हैं, बेशक वो 10 रुपए डोनेट करें, बेशक 20 रुपए डोनेट करें, दे जस्ट डोनेट, और हम उन्हीं पैसों को कलेक्ट करके हम किसी न किसी की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान के अंदर 25 से ज्यादा फैमिलीज का राशन करके दिया, ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट्स की वजह से हो रहा है। सॉरी, ओके, हमारी डिफरेंट टीम्स वर्क कर रही हैं। अब ये टीम्स में कौन लोग हैं? आप जैसे ही लोग हैं जो आ रहे हैं और इन चीजों को सीख रहे हैं और वो अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, लाइक टीम ह्यूमन रिसोर्स, एचआर टीम, तैयब रखना उसके डायरेक्टर हैं, दे आर आल्सो द को-फाउंडर ऑफ मल्टीओमिक्स। ये टीम क्या करती है? इस टीम का बेसिक मकसद होता है लोगों की इंटरव्यूज करना। जब आप लोगों की इंटरव्यूज करते हो तो आपके अंदर अपनी एबिलिटी पैदा होती है कि किस तरह के जवाब देने हैं, किस तरह के सवाल करने हैं, किस तरह से आपने अपनी कम्युनिकेशन को लेकर चलना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको मेरा वे अच्छा लग रहा है बोलने का, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो आपने अपनी स्किल्स को खुद डेवलप करना होता है, ठीक है। कैसे बात करनी है आपने किसी से, कैसे आपने किसी को कायल करना है अपनी बात पे, किन सवालात के जवाब देने हैं और कैसे देने हैं। टीम एचआर के अंदर ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। उसके अलावा टीम फाइनेंस है जो मल्टीओमिक्स का फाइनेंस सिस्टम होता है देखती है, ठीक है। उसके अलावा टीम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सालिया खालिद इसकी डायरेक्टर है, एंड शी वाज लाइक वन ऑफ यू, ठीक है, कि वो आई, वो एक स्टूडेंट थी, वो आई, उन्होंने एक टीम संभाली और उन्होंने वो दिखाया करके कि हाँ हम भी कुछ, मेरे अंदर एक सलाहियत है, मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर एक स्किल है कि मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती हूँ, और उसने उस कैपेबिलिटी को दिखाया करके, और आज वो एक अच्छी खासी हमारी टीम की डायरेक्टर है। शी वाज लाइक यू, वो भी एक स्टूडेंट थी हमारे कोर्स की, हम उनको पहले नहीं जानते थे, और आज वो पूरी एक टीम को लीड कर रही है, बीइंग अ लीडर, ठीक है। और शाहजेब यहाँ पे मौजूद है, सारा यहाँ पे मौजूद है, वो डेप्यूटी डायरेक्टर है इस टीम के। आगे टीम ग्राफिक डिजाइनिंग, अगेन अनीका वाज इज अ बायोसाइंस स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट है वो, लेकिन शी इज रियली अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन उसको कहीं मौका नहीं मिला कि वो अपनी स्किल को शो कर सके। वो मल्टीओमिक्स में आई और आज वो उस पूरी टीम को लीड कर रही है, जिसके अंदर बीएस ग्राफिक डिजाइनर्स वाले जो बच्चे हैं वो भी उसके उसका पार्ट है, ठीक है। वो इंटर्नशिप्स करके इवन गए हुए हैं हमारे पास, तो वो पूरी उस टीम को लीड कर रही है। और आप जितने हमारे पोस्टर्स वगैरह देख रहे होते हैं वो सारे उन्हीं की टीम की तरफ से बन के आ रहे होते हैं। उसके बाद टीम सोशल मीडिया, सर मोहसिन इज रनिंग इट, और सर मोहसिन जो है वो सोशल मीडिया पे काफी अच्छे से एक्टिव हैं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर वो रन कर रहे थे। तो वी रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू आवर मल्टीओमिक्स, और वो आए और उन्होंने भी मल्टीओमिक्स सोशल मीडिया टीम को रन करें। और आप देख सकते हैं कि जस्ट हमें ये 8 माह का टाइम हुआ है, 8 माह के अंदर हम compete कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि कई सालों से बनी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम उनसे ज्यादा अच्छा वर्क करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टीम कंटेंट राइटिंग, एक बहुत बड़ा, वो आप पाकिस्तान में हर जगह सुनते हो, कंटेंट राइटिंग सीखनी है, ये करना है, आओ, आपके पास मौका है, फ्री में आपको रोज टास्क दिए जाते हैं, आपके टास्क को चेक किया जाता है, आपको बताया जाता है कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं, आप लिख लिख के सीखोगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा फाइवर का सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कोई भी आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, आपके उन स्किल्स को इंशाल्लाह हम फाइवर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट विल बी स्टार्टिंग इन अ मंथ, और उसके बाद जैसे ही वो काम आया करेगा और आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करेगा, और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं काटा जाएगा कि 30% हम रख रहे हैं, 40% हम रख रहे हैं। जितने पैसे होंगे सारे के सारे आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, आपकी मेहनत आपके पास जाएगी, ठीक है। उसके बाद टीम लाइजॉन, बेसिकली इट इज फॉर डाटा मैनेजमेंट, जैनब इसको रन कर रही है। टीम कोऑर्डिनेशन, नबीहा रिजवान, अगेन ये सब वो लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सिर्फ मैं तैयब और अगना को पहले से जानता हूँ जो डायरेक्टर हैं, उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं ये वो थे जो हमारे पार्ट बने, हमारे मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आज पूरी की पूरी टीम लीड कर रहे हैं। तो यू कैन बी वन ऑफ देम, ठीक है। अगर आप चेंज लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो अपने अंदर भी चेंज लाओ और आप लोगों को सिखाओ, तो यू कैन बी आवर पार्ट। डिफरेंट क्लब्स आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हम रन कर रहे हैं, सीएसएस क्लब है, साइंस क्लब है, बुक क्लब है, इकबालियात क्लब, फिल्म ड्रामा क्लब, के पॉप क्लब, एनिमे क्लब, म्यूजिक क्लब, आर्ट्स क्लब एंड एडवेंचर क्लब,
ये सारे क्लब्स हैं सिर्फ आपके लिए कि आप आओ इसमें। फॉर एग्जांपल बुक क्लब, एक बुक मंथली बेसिस पे एक बुक रीड की जाती है, एक इंटरटेनमेंट बुक रीड की जाती है, एक इंफॉर्मेटिव बुक रीड की जाती है, और आप उस पर रिव्यूज लेते हो, आप डिस्कशंस करते हो आपस में। सेम सीएसएस क्लब, वहाँ सीएसएस के मुताबिक आपको जो भी गाइडलाइंस चाहिए वो दी जाती हैं। पोएट्री लवर्स इकबालियात क्लब का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। फिल्म लवर्स जो है वो फिल्म एक प्रॉपर एक फिल्म देखी जाती है मंथ में एक दफा। इस तरह डिफरेंट क्लब में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। एडवेंचर क्लब जो हमारा टूर्स का क्लब है, हम टूर्स वगैरह लेके जाते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द खुंजराब पास का टूर अरेंज कर रहे हैं, तो अगर इस्लामाबाद और पिंडी से कोई है जो हमारे साथ खुंजराब पास के टूर पे जाना चाहते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा था हमने हमारी अचीवमेंट मल्टीओमिक्स बनने के सिर्फ 2 माह के अरसे के अंदर अंदर हमने एक ऐसा इवेंट करवाया जो अभी तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्चुअल इवेंट है। लोगों ने हमें कहा इट इज नॉट पॉसिबल, लोगों ने कहा ये तो हो नहीं सकता, लेकिन वी डिड दैट। यू कैन सी हमने 27+ कॉम्पिटिशंस करवाए, 27+, ठीक है, जस्ट इन द मेकिंग ऑफ 2 मंथ्स। हमने 2 माह हुए थे हमें ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किए हुए। बहुत सारे लोग थे जो सीख रहे थे इवन अभी, और हमने ये इवेंट करवाया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट बना। 865+ पीपल जो थे इस इवेंट के अंदर आए, ठीक है, और इस इवेंट में उन्होंने रौनक लगाया और इसका पार्ट बने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्चुअल कॉम्पिटिटिव इवेंट है। और हमें देखा देखी अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने भी स्टार्ट कर दी हैं, डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्टार्ट कर दिए करवाने, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीओमिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, ठीक है। मल्टीओमिक्स फी स्टार 2020 में हमने करवाया था, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगस्त के 1st या 2nd वीक के अंदर हम एक साइंस का बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं। इट इज ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड यू विल लव इट, लिटरली यू विल लव इट, ठीक है। और उसके अलावा हमने अभी तक बहुत सारे कोर्सेज करवाए हुए हैं, जिसमें हमारा साइंटिफिक राइटिंग कोर्स, हमारा एक कहते हैं ना एक सितारा, आप एक होटल में जाते हो उनसे कहते हैं आपकी सबसे अच्छी डिश कौन सी है, इसी तरह मल्टीमिक्स में आके पूछोगे ना आपका एक स्टार चीज कौन सी है, कि आप कहते हो यार ये हमारा असल, ये हमारी बैकबोन है, ठीक है, हमारी ये प्रोजेक्ट्स की बैकबोन है, तो वो है साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग का कोर्स। आप जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे उनमें से 60% 50% लोग सिर्फ इस कोर्स की वजह से हमारे पास आए। और ये पाकिस्तान में हमने ट्रेंड स्टार्ट किया साइंटिफिक कोर्सेज का, साइंटिफिक राइटिंग, साइनॉप्सिस राइटिंग, एसपीएसएस का कोर्स अभी जारी है। उसके बाद हम कुछ फ्री सेशंस लेके आ रहे हैं, पाइथन, आर लैंग्वेज, इस तरह के सेशंस पे हम पहले थे जिन्होंने एक पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है साइंस कोर्सेज की, ठीक है, और वो आपको करवाई जा रही है। एंड वी चैलेंज इट कि हमारे इस लेवल पर जो हम आपको कोर्स सिखाते हैं और उसमें आपको एक बीएस के 1st सेमेस्टर का बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, वहां से लेके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स आते हैं ये कोर्स लेने के लिए। वो डॉक्टर्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के हेड्स हैं, वो डॉक्टर्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, वो आके हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स लेते हैं। और इस कोर्स की हमारी क्वालिटी इस हद तक होती है, कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जब आप यहाँ से सीख के निकलते हो इस कोर्स को, कोई चीज ऐसी नहीं होती कि आपको दुनिया में कोई आपको चीज बता और आपको हो ये तो मुझे पता ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, ऐसी बारीक बारीक चीजें जो शायद कभी आपको यूनिवर्सिटीज में भी नहीं समझाई जाती, ठीक है, कि ये चीजें आप सीख सकते हो, इतनी बारीक बारीक आपको चीजें बताई और सिखाई जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोर्स हमारा स्टार कोर्स है, जिसने हमारी हमेशा से कहते हो ना कि हमें राइज पर लेकर गया हमेशा। और ये कोर्स जो है मैं चलो बताता चलता हूँ, अभी तक ये पुरानी स्लाइड है, हमारे पास 700 से ज्यादा लोग ये हमारे कोर्स ले चुके हैं, 700+ over 30+ यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, बहुत सारे लोग। और ये कोर्स जो है ये कल अनाउंस हो रहा है दोबारा, इसका बैच 7 18 जून से इसका बैच 7 स्टार्ट होगा, तो यू कैन बी अ पार्ट, ठीक है। अगर आप बनना चाहते हो आपकी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हमने साइनॉप्सिस राइटिंग का करवाया, हमने फ्रीलांसिंग का करवाया, ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ। ओके, हमने फ्रीलांसिंग का कोर्स कराया, उसके साथ ई कॉमर्स का कोर्स करवाया, ताकि आपको पता लगे आप घर बैठे भी कैसे अर्न कर सकते हो। और ये भी बहुत जल्दी जुलाई के अंदर आपका ये वाला कोर्स भी दोबारा से आ रहा है। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग और इंग्लिश राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग का, ये देखिए हमने इंग्लिश का कोर्स करवाया जस्ट 200 रुपीज में, ठीक है, जहां आपको अकेडमीज में भी जाके 500-600 से कम कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, एफएससी के बच्चे को भी हमने 200 रुपीज के अंदर इंग्लिश का कोर्स करवाया। ना सिर्फ इंग्लिश प्लस कंटेंट राइटिंग प्लस सीएसएस इंग्लिश, इन तीनों का कोर्स, ठीक है, 200 हमने ईच का करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स हमारा बहुत अच्छा रहा। 200+ पार्टिसिपेंट्स आए जिन्होंने उसमें पार्ट लिया, और हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से बच्चों को वो चीजें सिखाई, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है। तो और हमारी मेंबरशिप जो है, अगर आप चाहें तो हमारा पार्ट बन सकते हैं, यू कैन बी अ मेंबर, ठीक है। हमारी मेंबरशिप की डिटेल्स आपके ग्रुप्स में आ गई होंगी। एग्जेक्टिव मेंबर बन सकते हैं या जनरल मेंबर बन सकते हैं। एग्जेक्टिव मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना, आपने क्या मतलब है, जो डिफरेंट टीम्स मैंने बताई हैं, अगर आप डिफरेंट टीम्स में काम करना चाहते हो तो आप एग्जेक्टिव मेंबर हो गए। अगर आप जस्ट हमारा पार्ट बन के रहना चाहते हो तो यू कैन बी अ जनरल मेंबर, ठीक है। तो अब आप लोगों के अगर कुछ सवाल है मल्टीओमिक्स से रिलेटेड तो यू कैन आस्क,
ठीक है, मैं आप लोगों की स्ट्रीम देख रहा हूँ लाइव, आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल आंसर देम। ठीक है, तो इंशाल्लाह मल्टीओमिक्स का पार्ट 1 और यू विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, आपको किसी भी किस्म का मल्टीओमिक्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना चाहते हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। साइनॉप्सिस का भी बता दें कि क्लास रख सकते हैं जी सर। जी मरियम, आप मेंबर बनना चाहती हैं तो आपके ग्रुप में डिटेल आई होगी मेंबरशिप की, आज आप वहां से रजिस्टर कर सकती हैं। और साइनॉप्सिस राइटिंग के अभी कोर्स तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास उसकी वीडियो पड़ी है। लेकिन अगर आप साइनॉप्सिस राइटिंग की जगह आई विल प्रेफर कि आप साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स लो, क्योंकि उसमें साइनॉप्सिस सारी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी आपकी। और साइनॉप्सिस ही नहीं, आप उसके बाद थीसिस राइटिंग और रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल राइटिंग, आप सब कुछ उसमें सीख जाओगे। ठीक है, किसी ने वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का पूछा है, उमर इरफान, तो उमर मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स होगा उसके साथ ही हम अटैच कर रहे हैं बेसिक वीडियो एडिटिंग फ्री के अंदर। ठीक है, उसको फ्री में सिखाया जाएगा। मैं खुद एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं सारा कुछ ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स से मैं करता आ रहा हूँ। ठीक है, वन ऑफ माई वीडियोज गॉट 8.7 मिलियन व्यूज, 87 लाख लोगों ने देखी है पाकिस्तान, इंडिया, एशिया पूरे के अंदर। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फ्री वीडियो एडिटिंग की क्लासेस दूंगा ड्यूरिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। और फोटोग्राफी भी मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स योर प्लेटफॉर्म, आपकी मल्टीओमिक्स है आप लोगों की। ठीक है, तो भूल जाओ हर चीज। देखो आप क्या चाहते हो, आप जिंदगी में आए हो क्या सिर्फ जीना है, और जीने के बाद एक दिन आएगा, आप अभी पैदा हुए हो, आप पैदा होकर बड़े होगे, स्टडी करोगे, आपकी नौकरियां लगेंगी, शादियां होंगी, फिर आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक टाइम आएगा आप अपने डेथ बेड पे पड़े होगे और आप सोचोगे यार मैंने क्या किया जिंदगी में, क्या मैंने किसी के लिए कुछ किया या मैंने जिंदगी अपने लिए सिर्फ गुजार दी। ये जिंदगी आपके लिए नहीं है, वो जो आपने अपने लिए जिंदगी गुजारनी है वो आपको जन्नत में जाके मिलेगी सबको इंशाल्लाह। लेकिन ये जो अभी की जिंदगी है ना, ये आपने दुनिया वालों के लिए गुजारनी है, आपने लोगों की खिदमत करनी है, किसी भी तरह करो। इल्म हासिल कर रहे हो, उस इल्म को बांटो, खुद कुछ सीखा है लोगों को सिखाओ, लोगों को लीडर्स बनाओ। जो मैंने कहा हमने फैक्ट्री क्रिएट करनी है आप लोगों को। हाँ देखो, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं आता था, आज वो प्रॉपर वो सब सीख चुके हैं और वो आगे लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आपने जो इस दुनिया में ना, आपने दुनिया वालों के लिए जीना है, अपने अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी है, उससे बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं। और उसका रिवॉर्ड लोगों ने नहीं देना। कभी ये मत ना सोच, कभी ये ना सोचना कि आपको लोग रिवॉर्ड देंगे जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, नहीं, उसका रिवॉर्ड देना है अल्लाह ताला ने आपको। ठीक है, सिर्फ वही उसका रिवॉर्ड देगा और वो आपको किसी ना किसी दिन मिल जाएगा। अच्छा, किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं आप ये क्लब्स को? आप अगर आप जनरल मेंबर बनते हो तो आप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्जेक्टिव बनते हो तो टीम्स और क्लब दोनों का पार्ट बन सकते हो। आपके ग्रुप्स के अंदर डिटेल आ गई होगी, आप चेक कर सकते हो विद पोस्टर, आपको लिंक्स वगैरह भी मिल गए होंगे। ठीक है, नहीं तो हमारे पेज भी विजिट कर सकते हो, वहां से भी चेक कर सकते हो। सेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, उमर हमारी एचआर की टीम है। अगर आप पार्ट बनना चाहते हो, आप एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर रजिस्टर करोगे तो आप एचआर टीम में रजिस्टर करना, तो आप उसका पार्ट बन जाओगे। नहीं, अच्छा मिनाहिल पूछ रही है कि हम जनरल मेंबर एग्जेक्टिव मेंबर दोनों बन सकते हैं। मिनाहिल देखें, बेसिकली दोनों एक ही चीज है, चाहे आप जनरल मेंबर हो चाहे आप एग्जेक्टिव मेंबर हो। ठीक है, वो एक ही चीज है, फर्क सिर्फ ये है कि जो एग्जेक्टिव मेंबर्स जो होते हैं वो टीम्स में काम करते हैं और जो जनरल मेंबर्स होते हैं वो टीम्स में काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर्स हो रहे हैं, आपके कोई हेल्थ इश्यूज हैं, आप वर्क नहीं कर पा रहे लेकिन आप पार्ट बनना चाहते हो। ठीक है, आप वर्क नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आपको अपडेट्स चाहिए, आप आना चाहते हो, आप हमारा इस फैमिली का पार्ट बन के रहना चाहते हो। ठीक है, तो आप जनरल मेंबर बन सकते हो। लेकिन अगर आप काम भी करना चाहते हो, साथ आप यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, डिफरेंट टीम्स में काम करना चाह रहे हो जो मैंने आपको दिखाई क्लब्स का, तो आप जनरल मेंबर बन के भी पार्ट रह सकते हो। लेकिन अगर एग्जेक्टिव काउंसिल का पार्ट बनना चाहते हो तो ठीक है, यू कैन बी अ पार्ट। ओके, तो वो एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर अगर आपने काम करना है तो जी आप सबको लिंक्स दे दिए, आप रजिस्टर हो सकते हैं, आपके ग्रुप्स में लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, पीपीएससी के लिए हमारा टेस्ट सेशन होता है अज़का, अगर आपको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, आई विल लेट यू नो कि आपने कहां पर जाना है, आपको एक नंबर दे दूंगा सर जिशान का, आप उनसे कांटेक्ट करें। वो अभी भी इंग्लिश के टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट सेशंस करवा रहे हैं पीपीएससी के लिए। क्लब को ज्वाइन करने के लिए आपको जनरल मेंबर बनना पड़ेगा। उसके बाद जब आप मेंबर बन जाएंगे तो आप किसी भी ग्रुप हेड को मैसेज कर दें कि आपने जिस भी क्लब में जाना है तो आपको वहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आई थिंक हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ग्रुप्स में मौजूद हूँ, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे आप लोगों को। ग्रुप्स आपने लीव नहीं करने। ठीक है, 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है, आपको पता है काफी लोग रजिस्टर करते हैं, 700-800 लोग, तो उनको सबको देने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हेस्ट नहीं करना, आप सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा कहता हूँ सर्टिफिकेट्स मैटर नहीं करते, आपकी स्किल मैटर करती है। अगर आपको एक काम आता है, आपके पास 100 सर्टिफिकेट हैं और वो काम नहीं आता तो आप किसी काम के नहीं हो, वो सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट एक है लेकिन वो काम भी आपको आता है तो वो लिटरली वो चीज आपकी स्किल है, आपकी स्किल मैटर करेगी।
अगेन अगर आप पार्ट बनना चाहते हो तो इंशाल्लाह आपके ग्रुप में लिंक है, आप पार्ट बनो और मैं आपको फर्दर भी गाइड करता रहूंगा। आपको कोई इशू आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेटर्स भी वहां पे मौजूद है, मैं भी वहां पे मौजूद हूँ। ठीक है, ग्रुप लीव ना करिएगा जब तक आपको सर्टिफिकेट ना मिल जाए। अगर आप पार्ट नहीं बनना चाहते, अगर पार्ट बनना चाहते हो तो ग्रुप में आपके लिंक्स वगैरह आप उनके थ्रू भी पार्ट बन सकते हो। साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स जो लोग लेना चाहते हैं, कल उनको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, कल हमारा कोर्स भी अनाउंस हो जाएगा, तो वो आप लोग उसका पार्ट बन सकते हो। ठीक है जी, जनरल इज फॉर लर्निंग एंड एग्जेक्टिव इज फॉर लर्निंग एंड आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। गुड उमर इरफान, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के तौर पे, इंटर्नशिप्स और कोर्सेज के तौर पे। बहुत ज्यादा आपको, अगर आप ग्रुप्स में हैं रहेंगे तो आपको वहां भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस सेशन का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। लिटरली आप लोगों की वजह से है जो रौनक लगती है, वो आप लोगों की वजह से। आप लोग हमारी सपोर्ट हो, आप लोग हमारी बैकबोन हो। या एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, जब ये हमारी चैट एंड हो जाएगी तो जब आप दोबारा ये पब्लिश होगी वीडियो, उसमें जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप लोग रिव्यूज दीजिएगा आके। ठीक है, क्योंकि वहां आपकी ये जो लाइव चैट है ये बाद में एंड हो जाती है, ये नजर नहीं आती। तो कमेंट सेक्शन जो होता है वहां आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा तीनों वीडियोस पे जाके कि आपको तीनों सेशंस कैसे लगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और जो भी कोर्स वगैरह की डिटेल आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, हम आपको सारी डिटेल्स वहां बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन अपना टाइम देने के लिए। और इंशाल्लाह वी विल वर्क हार्ड, और हम इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे इस पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।